can increase it later, no? We can go live. हाँ, please do that. Let's go live and then increase it. All right, people of this planet, welcome to welcome to your own Aakash BYJU'S NEET channel. Yes, ma'am is right here, like every day, like every evening, meeting all of you for one of her favorite sessions. You know how much I love solving questions with you, है ना? क्योंकि हमें असली तैयारी का तभी पता लगता है. Little bit more, Bhagirath. Yeah, this will work. I think it's going down. I should visit a doctor. Sorry. So people, yeah, now I can read your messages. Ma'am की eyesight दिन ब दिन खराब होती जा रही है ना? My opthal tells me it's got something to do with the camera. Yeah. Anyway, so I'll correct it. थोड़ी सी rebooting की ज़रूरत है मेरी आँखों को. Good evening बच्चों. जसप्रीत, दीपांशु, Dr. Yash, future cardiologist. My God. Huh? Now that speaks to me. Amisha, Shelly, hello प्यारी मैम. Oh, hello प्यारी बच्ची. Aditi, बेटा I'm absolutely fine. मेरे से भी कोई पूछ रहा है how are you? वेदांत, good evening. इराम फातिमा, hello बेटा. आप लोगों से मिलके मेरे दिल में जो खुशी उत्पन्न होती है, जो खुशी आती है, the happiness that I feel here in my heart when I meet you guys every day. And you know, astonishing, I'm sharing this like a friend with you. Yeah, heart to heart. It's been 11 years. It's been good. Maybe a 6 months of break in between. Let's say 10 years of teaching. And I still feel the same excitement and happiness when I meet you guys. You know, somebody was asking me just right before the class, a friend was asking me, yeah, are you excited about this? Are you excited about going here, doing this? And I was like, you know what, the kind of excitement I feel when I meet my students, nothing else is matching that. Nothing else rings the bell as much when I meet you folks. है ना? So thank you for being here. आज की जो क्लास है मेरी बड़ी पसंदीदा क्लास है और मैंने ना, thanks to my lovely team, they have included questions of NEET 2022, 2021, 2020. तो आज आपको पता लग जाएगा कि क्या आप नए नीट पैटर्न के हिसाब से as far as morphology of angiosperms is concerned, इतने प्यार से हमने पढ़ा, इतना उसको नाजुकता से, इतनी गहराई में पढ़ा, फ्रूट, सीड, वेजिटेटिव ऑर्गन्स की मॉडिफिकेशन, फ्लावर के पार्ट्स, भाई आज गलती होनी नहीं चाहिए. इसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है जो मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. अल्फिया खान, गुड इवनिंग. फटाफट सेशन को शेयर कर दें बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी द टॉप रैंकर्स लाइक दीज स्टूडेंट्स, है ना. ये नीट 2022 के हैं, आप नीट 2023 या 24 के आराम से खुशी खुशी हंसते हुए, कोई भी ऐसा उदासी का या चिंता का काम नहीं है. यू नो, कुछ साल पहले जब हम लोगों ने कंपेटिटिव एग्जाम दिए थे तो यार बड़ी इट यूज्ड टू बी क्वाइट अ मैटर, सीरियस मैटर इन लाइफ, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करना मुश्किल होता था. लेवल ऑफ द पेपर वाज समथिंग एल्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, नंबर ऑफ सीट्स वर मच मच लेस. लेकिन आज आप लोग उस बेस्ट एरा में हो. मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट आई एम नॉट अ सूटसेयर, बट दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरा फॉर दिस जनरेशन जिसमें आप जो चाहो कर सकते हो और उसी ग्राउंड पर, ताकि आप जो चाहो कर सको, आकाश बायजूस is bringing ANTHE exam, which is India's largest scholarship test. Lakhs and lakhs of students, just like the NEET exam, appear for this test every year. So you should also appear for it. Register free of cost right now by clicking on the link in the description box, and the exam will happen in November. इसके अलावा अगर आप एक ड्रॉपर हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो JEE ड्रॉपर्स हैं, तो Aakash BYJU'S has launched classroom courses, है ना, classroom courses, जिसमें if you give the scholarship test and you get a good score, you can avail up to 50% scholarship. Now that's not less, that's perhaps the maximum that anybody can offer. तो आप देख सकते हो ना कि क्या इंटेंट है आकाश बायजूस का, आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करना. और मैम तो हमेशा ही रोज यहाँ पे है, 24/7 मैम यहीं पे हैं आपकी मदद करने के लिए, है ना. और उसी
बेसिस पे मैं ये कहूँगी कि 11वीं 12वीं ड्रॉपर्स ये सारे बैचेस चल रहे हैं, कोई भी बॉटनी का, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई बैकलॉग है तो उससे घबराएं नहीं. Just join these classes regularly. You know, ask students who are a part of every class. There are some people who are regular to all my classes. You feel, you ask them, talk to them. There's a lot of confidence one gains when they are regularly connected to the teacher. गुड इवनिंग आकाश. बेटा मैंने सारे दिल देख लिए, टूट भी गया, बन भी गया, रैप भी हो गया. कंट्रोल, हाँ, इमोटिकॉन्स यूज करने में जो मजा आता है उसको कंट्रोल करें. ओके रुपेश, वेल सेड, दैट्स अ टॉक ऑफ विजडम. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक दिस सेशन. रुपेश, सिद्धार्थ, विशाल, फटाफट लाइक दबा दो और शेयर कर दो सारी जनता जनार्दन के साथ. सबको ले आओ मैदान में, है ना. मोर द कॉम्पिटिशन, बेटर प्रैक्टिस इट इज. डू यू अग्री और नॉट? हाँ, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री. Subscribe to this channel because come on, you love us so much. You don't want to miss any sessions by ma'am. Anything you have to ask, put it in the comment section. Here is the first question, ladies and gentlemen. Which one of the following plants shows vexillary? And this is from 2022. Now today, I am not saying that this topic is important, this question is important. ये कर लेना जिंदगी में, वो कर लेना. मेरी तरफ से कुछ ना करो, मेरी तरफ से सब कर लो. I would still appreciate and love you. But look at this kind of question. मैंने आपको हमेशा बोला कि भैया मैं आंसर ना दे दूं कहीं अपनी इमोशन में. हाँ, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ना, जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने आपको अपनी आत्मा से, अपने पेट से आवाज निकाल कर ये बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है. And it is a question of NEET 2022. It is a question of NEET 2021. It is a question of NEET 2020. Okay, so thank you for all the correct answers. You are absolutely correct. What? Okay, ignore this, please. The question has changed. But मुद्दे की बात ये है जनता कि फेबेसी फैमिली में तुम्हें उस दिन याद होगा मैंने इतनी प्यार से 2 क्लासेस में रिपीट की थी वेक्सिलरी एस्टिवेशन. और मैंने तुम्हें बोला था ये एग्जामिनर का, मेरा सबका फेवरेट क्वेश्चन है सदियों से, जब से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आया है. तो कैसे याद रखेंगे? दिस इज द पोस्टीरियर पेटल, दिस इज द लैटरल एले और द विंग्स, एंड दिस इज द कील और कैरिना विच आर एंटीरियर पेटल्स. इट इज सीन इन P family, Pisum sativum. Acha, now I'm going to take you to the AIMS level question through this question. Juhi, are you listening to me? Shraddha, are you listening to me? It is seen only in the petals of Pisum sativum. Even Lathyrus, the genus Lathyrus, it is not seen in sepals. Be very careful of the traps. Yeah, the pattern of the paper can change any time. Next question, again from NEET 2022. NEET 2022 had lengthy questions in botany. They were multi-statement questions and we had to pick up the true statements. One such question which troubled a lot of janta in the country. Yeah, let's give it a read. You need some time to read these questions. You need presence of mind to read these questions. Yeah, the better is your read, better is the presence of mind, there is more probability of getting a correct answer. And after all, the entire journey is about, the entire game is about how many correct answers you yield out of the NEET paper and you avoid negative marking. I think मुझे हिंदी पे चले जाना चाहिए. अच्छा, मेरे को क्वेश्चन बैंक बोलने लग गए हैं कई बच्चे. ऐसा भी होता है, अगर महीनों सालों मेरे से पढ़ते रहो ना, फिर ये बच्चे शरारती भी हो जाते हैं और मैं पिटाई नहीं कर पाती हूँ. Answers, guys. What is wrong with you? Are you still reading this? We can't have so much of time. Biology deserves only 30 seconds. Bio में केवल 30 सेकंड पर सवाल ही दें, तभी जिंदगी में सुखी रहेंगे. संचित जो हो रहा है उस पर ध्यान दे लो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ यार. इतनी देर बाद आंसर्स आ रहे हैं, क्यों भाई? ऐसे मत करो यार. यू हैव टू सी नीट, JEE, UPSC, la, any competitive exam, especially NEET. NEET is one exam in the country which has maximum number of questions. No competitive exam has these many questions for 3 hours and negative marking. It's killing. So accuracy and speed both have to be done. If you're simply accurate and you don't have speed, it's not going to happen.
Okay, that is the harsh truth. So people, a lot of correct answers. Mayank, यार पढ़ाई नहीं करते हो फिर गलत answers देते हो, है ना? And then you won't like it that I'm saying it. So इसको solve करते हैं. The leaflets are modified into pointed hard thorns. This is the key word in citrus and bougainvillea. Now people, मैंने ये बार बार घोट घोट कर खिलाया तुम्हें कि thorns are a modification of stem. Axillary bud is actually giving tendrils and thorns. Now if I go to absolute decimated concept, it is the axillary bud. But for the uninitiated ones, it is thorns is the modification of stem and spine is the modification of leaf. The most common confusion. So leaflets का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ये हो गई false statement. Okay, axillary buds form slender and spirally coiled tendrils. I just said it. And the examples are, what did I tell you? The entire Cucurbitaceae family, pumpkin, Ghia, Tinda, Thori, all of those bhai behan, melons, they belong to Cucurbitaceae family. That family will have the tendrils, but those are stem tendrils, people. Those are stem tendrils. Don't get confused with leaf tendrils, which is seen in Pisum sativum. Are you listening to me, girls and boys? Okay, so this is a true statement, yeah. Stem is flattened and fleshy in opuntia. You with me? It is cylindrical. Now I'm telling you AIMS level के question from the NEET question. वो ये भी पूछ सकता है cylindrically modified stem कौन सी है भाई? It is in euphorbia. But if it is flattened, the function is same. It has to be fleshy and photosynthetic because leaf is modified into spine. Yeah, with me? And it cannot perform photosynthesis. There we go. This is quite a true statement. Rhizophora is a mangrove species. Shows pneumatophosia. NCERT has given the picture also. Black and white picture, not very charming. But वहाँ से question आएंगे. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen. इनको बोलते हैं pneumatophores. Avicennia, Soneraceae are the other examples. True statement. Subaerially growing stem in grasses. Cynodon dictylon. Runner. AIMS assertion reason question. Why does it happen that we plant grass in one corner of a garden and it spreads very quickly within a week to the entire garden? Because it runs. And same is the strawberry. Now strawberry, according to NCERT, has been put with grasses. All other authors, study materials, books put strawberry in stolon. But please follow NCERT evidently. You don't have to take my word for it. Okay, all discussed. Third question from NEET 2022. Which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? Come on, people. रुपेश, मैंने ऐसा पाया है कि तुम मेरी क्लास में तभी आते हो जिस दिन क्वेश्चन सॉल्विंग होती है. हाँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ? कोई बात नहीं. It's okay. You can tell me the truth. Just letting you know कि मुझे एक एक बच्चे की खबर रहती है. ये मत सोचना कि मैम को पता नहीं लगता. Cool people. यार false fruit है, actually ये कटा हुआ एप्पल है. तो ये सीड या फिर ये जो सेंट्रल पार्ट है ओवरी, it is not going to prove that this is a false fruit. Apple is a false fruit because the edible portion, this portion ना बाबा, अब तुम भी नहीं चलोगे. हाँ चल पड़ा. Because this portion is the thalamus. The C portion, which is the edible portion, is not the ovary. It is the thalamus. Same is seen in, can you give me other examples? Please? Come on. It is cashew nuts and pear. Okay. डायड 2021 पे आ गए हैं हम. मॉर्फोलॉजी के 3 सवाल आए थे नीट 2022 में. कितने सवाल आए थे भाई? 3 सवाल आए थे, तीनों अपन ने कर लिए. अब डायोडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन नीट 2021 का क्वेश्चन. फटाफट. जनता बोल रही है. ओके,
Lot of correct answers, काफी ज्ञानी लोग हैं. So diadelphous stamen was one of the diagnostic features in the floral formula. Did this line from me make sense to you? I told you, इस पे हमेशा ध्यान देना. This is a diadelphous condition or the 9+1 condition. Diadelphi भी बड़ी weird तरीके से हो रही है. एक स्टेमन, मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी, एक स्टेमन अकेला मंडरा रहा है, बाकी 9 ने अपने आप को एक बंडल में बांट लिया. So diadelphous condition is 2 bundles of stamens. नीट 2020 का सवाल, रे फ्लोरेट्स given in NCERT, spoken to you in the class, explain to you what are ray florets, what are disc florets. Come on people, you're taking too much time. 10 seconds. फटाफट बताओ यार, डर क्यों रहे हो इस सवाल से? What will be the answer? Gitanjali has answered. Okay, Maya Suryavanshi has answered. Tanu Verma, Deepu, Shiva Chauhan, Avni, Poonam Gupta, Juhi, you are late in answering this. मेरे को ना मारने का मन कर रहा है. Poonam, Mayank, there are 2 Poonam. Iram, Fatima, Lakshmi, Siddharth. Okay, people. Enough correct answers. Now, Janta, I will repeat the concept here. We saw there is position of ovary and floral parts. Position of ovary and floral parts. And I told you all the possible tricks to remember this and not mug up. हाँ, गाना बजाना नहीं करना है. Position of ovary and floral parts. So, you have to make mindful tricks in the class. Yeah, they can't see what I'm writing. Okay. तो इसमें जो तीसरा आता है, that is your epigynous condition. Epigynous condition. मुझे बार बार हटना ही पड़ेगा. Epigynous condition में floral parts, इसको *1 डाल देते हैं और इसको स्टार डाल देते हैं. Position of floral parts is superior and position of ovary is inferior. Classic example is guava. Tell me if I'm wrong. Cucumber. भाई मेरे से भी गलती हो सकती है एग्जाम्पल्स में यार, इतना सामान भरा हुआ है यहाँ भेजे में. And ray florets of sunflower. आया? कुछ आया? And then I explained you sunflower में क्या कार्यक्रम चलता है. Capitulum inflorescence, disc florets, ray florets, ला. इतना याद रख लो, गनीमत है भाई. एग्जाम्पल्स याद रख लो इंपॉर्टेंट चीजों के. नीट 2021 का सवाल आ गया है अब हमारे सामने. कहाँ जाएं? द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम. दिस इज अ इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. 2021 में तो खैर पेपर बहुत ही इजी आया था. नीडलेस टू से दैट. फटाफट. आशिया शेख, good to have you for the first time in my class. Ashia, hope to see you regularly. Poonam, okay, enough correct answers. So the roots that originate from the base of the stem, here the best choice that you have is the fibrous root. चमका या नहीं चमका? Okay. Which one? This is one of my favorite questions. We did this quite smartly in our very previous class, जिसमें मैंने morphology, जिसमें मैंने angiospermic families की बात करी थी. अब जरा, you know what? I'll see who is giving the first answer in this. Amisha, Shelly, good to have you, darling. Juhi, where are you? Jia. Okay, which of the following is the correct floral formula of Liliaceae? Told you how to solve such questions. Google करने लग जाते हो क्या आंसर? सारे हैक्स पता है मुझे. ये मत समझो कि मैम को कुछ नहीं पता है, बस मैम तो आगे पढ़ाती हैं, मैम ने तो ये सब किया नहीं है लाइफ में. Okay, now let's do it my way. Now I made it super easy for you. I said
learn the diagnostic features of every family and please make your life happy and easy. So the diagnostic feature of the only monocot family in your syllabus, Liliaceae, is, what are the diagnostic features? Now also मेरे हिसाब से, मेरी ट्रिक से फ्लोरल फॉर्मूला इजी बनाने के लिए आपको सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, क्योंकि मैंने वो सब किया हुआ है ना, G1, G2, G3. Do you remember that? Zygomorphic, actinomorphic, actinomorphic. So do that. Now Liliaceae family में this is the first diagnostic feature, which is the epipetalous condition, epiphyllous condition, yeah, or the epitepalous condition. And then the next diagnostic feature is the presence of perianth. Actually that could be the first feature, जो और किसी फैमिली में नहीं है. फिर मैम ने 1, 2, 3 बताया है गाइनोशियम की कंडीशन, तीनों फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी है. जी 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 विद अ लाइन एट द फुट. कितने लकी हो यार, हमें किसी ने ऐसे नहीं पढ़ा. सो इट इज अ ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी. ऑल द 3 डायग्नोस्टिक फीचर्स यू विल सी देयर. आया या नहीं आया? एंड ट्राइमरी इज सीन ओनली इन लिलिएसी. फेबेसी और सोलनेसी में तो पेंटामेरी है. कुछ नहीं समझ में आ रहा मैम, क्या बोल रहे हो? If it is making sense to you, what I just said, you are on the right path. I know, like Gia is so honest. I really love honest people यार, बड़े कम हो गए हैं दुनिया में. Ma'am, I missed your session for this trick. This is not taught to us in other classes. Okay, Gia, darling, you can always watch that class again. And I'm not saying it because it is my class and I want you to watch it and I want you to like it and I want you to appreciate it, because it is essential for everybody. Nobody is doing families like I did in that class. ये मैं, I'm not boasting about it, but it is essential for a student to have those tricks in their head. Beta, right now I'm not teaching offline. It's only here at the channel. Next question, placentation in which you know the session is at 5:30 till 5:30. तो बातें फिर भी अगर करनी है तो I don't know what you guys are. Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part. What an easy question यार. हाँ, NEET 2019 का question. Amisha, stop saying that. Okay. फटाफट यार, तुम लोग बड़ी देर लगा रहे हो आज. पहले तुम बड़ी जल्दी आंसर, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे देते थे. अब कुछ लोग स्पैम भी कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं उनको. लो यार मजे लाइफ के, खुश रहो, तुम्हें जो करना है करो, खुश रहो बस. That's all that matters. Thank you very much. It is parietal placentation. You know, he gave the answer when he said inner wall. Yeah, inner wall of the ovary. It is a unilocular ovary and ovules develop at the periphery. And this does not happen in any other placentation. Can you give me the examples of this? Parietal placentation. ब्रासिका. मस्टर्ड में क्या होता है? मस्टर्ड में कभी कभी ओवरी में सूडो सेप्टम डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जूही, मैं क्या मारूंगी भाई, तू मिल मेरे को. क्या मारूंगी फॉर सेइंग लेमन. ओ हो, डंडे ले लेकर मारूंगी मैं. एंड समटाइम्स माई वर्ड्स आर इनफ. You guys are not good with examples, work on that. Yeah? Replum develops in mustard. Numidophores occur in which plants? Good question. It can also come in ecology. फटाफट तो करते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो मैम तैयारी नहीं हुई अच्छे से. अजीब अजीब से नाम लिखते हो. My hair are still wet yaar. Okay. So what are halophytes? Halophytes are the plants. Halo का मतलब है saline soil. I know halo का मतलब होता है empty as well. But botany में halophytes का मतलब है saline soil में grow करने वाले. So ये हमें marshy areas में मिलता है.
ये हमें किस में मिलता है भाई? मार्शी एरियाज में मिलता है। वही वाली बात है, मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव ओनली इफ दे आर एबल टू डेवलप। मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव स्पीशीज डाई बेचारे। सुंदरबंस में मैंग्रोव वही स्पीशीज सर्वाइव करेगी विच विल डेवलप न्यूमेटोफोर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। अच्छा, कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन है ना न्यूमेटोफोर्स? इज व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज इट? मेरी बात का तो जवाब दो यार, चिपक गए हो आंसर को। मयंक इज सेइंग इट्स अ रूट मॉडिफिकेशन। अरे भाई कौन सी रूट? आंसर लाइक अ नीट एस्पिरेंट, नॉट लाइक अ 10th क्लास किड। कौन सी रूट? इज इट टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट? पीपल wake up. Thank you. It is taproot. Why do I ask that? Because this happens. Why did I ask you whether it is taproot or adventitious root? Because these kind of questions come. Sweet potato is a modified what? And then you keep wondering, is it taproot? It is fibrous root? It is what root? Fibrous root तो दे ही नहीं रही modification, उसको तो अपने आप ही एक modification माना जाता है. It is an adventitious root. So potato is a stem. Sweet potato is a modified adventitious root where the single root becomes the tuber. That is also important. Okay. Ipomia batata. I don't think scientific names का जमाना रह गया. पता है हमें कितने scientific names याद करने पड़ते थे? घुल जाते थे हम लोग. Okay, last question of today. Root hair develop from the region of. Root hair develop from which region? आदर्श ने सबसे पहले जवाब दिया है. रुपेश बेटा क्या कर रहा है लाइफ में? क्या कर रहा है लाइफ में? इट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन. तो ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है? सबसे पहले आया रूट एपेक्स. कैन यू मिनिमाइज मी? ओके, आई विल राइट इट हियर. सबसे पहले आया रूट एपेक्स विच इज सब टर्मिनल इन पोजिशन. सेकेंड आया मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी विच इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. ओके, एंड द फर्स्ट इज द रूट कैप विच इज कवरिंग द रूट एपेक्स. Third region is elongation, which is important to increase the length of the root. And चौथा region होता है maturation region, जहाँ पे differentiation होती है. और इसी region में से unicellular, another question from this question, unicellular root hair will develop. What is the function? Increase the surface area of absorption. तो इस तरह से क्वेश्चन की डाइसेक्शन करना बड़ा जरूरी हो जाता है. चमका? काइंड ऑफ चमक गया सब कुछ? हैप्पी? यार साहिल का डाउट दिखाएंगे आप मुझे? कभी कभी आता है क्लास में, लाइक अ वॉक इन द पार्क. साहिल इट इज ऊपर चला गया डाउट. कैन यू स्क्रॉल डाउन? नहीं, साइंटिफिक नेम्स ओनली गिवन इन एनसीईआरटी. आई वांट टू आस्क इट इज नहीं, फिर से चला गया. हाँ, I want to ask Sahil, whenever you have a doubt in life about anything, I'll give you the sagely view of that. Ask it from yourself. If it is not clear, find a mentor and ask your doubts. Never go to bed with doubts in your head. So yes, the answer is yes. Okay, people, thank you very much. Tune into environmental issues, soil pollution at 5:30. यहीं पे ही log into that session, everybody. जो 12वीं क्लास के हैं, the topic is soil pollution. We are going to begin soil pollution right now. We are good. Thank you very much. Bye bye. See you.